Hello students, let's begin with our next question of practice set 4. First question we have solved. Base was given 6.4 centimeter, A angle was given and T angle was given. Now see the second example. It is just like the first one. Here also we have to draw a triangle MNP. In that NP should be 5.2 centimeter. So rough figure NP 5.2 centimeter, N angle is 70 degree and P angle is 40 degree. So this is 40 degree, this is 70 degree and this is your point M, third point M. So we will start. First draw the base. 5.2 means this is 5 and second dot after 5 means here. Give a dot here and give a dot and 0. So 5.2 and 0. Join both the dots. Name it as NP. Write down its measurement 5.2 centimeter. Then keep the protractor on point N for drawing angle of 70 degree. So our side of the triangle is on right side of the center. So 70 degree also we have to take on the right side. So here it is 70 degree. Join both the dots. And give an arrow because it is a ray. Now from P point we have to draw 40 degree angle. So keep the center on P point. Adjust the base of the protractor. Now where is our side? On the left side. So left side वाला 40 डिग्री लेंगे. ये यहाँ पे है 40 डिग्री, इधर भी है, ये नहीं लेना है. Take this 40 degree. Mark here with a dot. Now join this P and 40 degree dot. So it will look like this and triangle will be formed automatically. Now give a dot at this point of intersection and name it as point M. So this is your 70 degree angle and this is your 40 degree angle and this is your triangle MNP. Now we will take the fourth example. Third one I will take after the fourth one. Now see, in the third example also we have to draw triangle XYZ, XY 7.3. So in the rough figure we will take XY 7.3. Angle X 34 degree. 34 मतलब एकदम छोटा सा. And angle Y 95 degree means right angle से थोड़ा सा बड़ा. So this is your 95 degree. And this will be your point XY. कौन बचा? Z. So same step. First draw the base. How much? 7.3. So ये 7 है. इसके आगे का थर्ड पॉइंट मतलब ये यहाँ है. So give here a dot and give a dot on 0. 0 and 7.3. Join both the dots. Then at point X we have to give it a name. X, Y 7.3 centimeter. At point X we have to draw an angle of 34 degree. So right side में हमारी साइड है, ये सेंटर है प्रोट्रैक्टर का. सेंटर के राइट साइड में हमारी साइड है XY. तो राइट साइड में 30 देखो ये यहाँ है और 30 के बाद की फोर्थ लाइन means this one. So this is our 34 degree. Again I think we will have to rub this rough figure. Let's see. At Y we have to draw 95 degree angle. So 95. ये 0 लेना है हमें लेफ्ट वाला क्योंकि अब सेंटर यहाँ है और हमारी साइड लेफ्ट में यहाँ है. तो बाहर वाले 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. ये 90 है एंड 90 के बाद वाली फिफ्थ लाइन. सो दिस इज अवर 95 degree. So what we will do, just we will rub this point X
and we will join y with this point 95 degree, and this we will extend a little bit. So this is our triangle XYZ. Give here a dot. So this is 34 degree. This is obtuse angle 95 degree. Rough figure we will modify a little bit and we will shift it on the right side. रफ फिगर को थोड़ा कॉर्नर में ड्रॉ करेंगे. X Y 7.3 centimeter, Z and 34 degree 95 degree. So this is our fair figure, triangle of X Y Z. Understood? Now we will take the third example. Why we are taking it at the last year? It is little bit different. In triangle EFG, triangle कौन सा बनाना है? EFG. इसमें EG दिया है 6 सेंटीमीटर, मतलब EG को ही बेस लेना पड़ेगा. तो एंगल कौन सा देना चाहिए? E और G. पर यहाँ पे कौन सा एंगल दिया है क्वेश्चन में? F और G. हमें चाहिए था E और G, तभी हम ट्राइंगल बना पाते थे. अब उन्होंने एंगल दे दिया है F एंड G. तो क्या करना? नो, इट इज़ नॉट अ रॉन्ग क्वेश्चन. व्हाट वी विल डू? वी विल यूज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल विच वी हैव स्टडीड in 6th standard. What is the property? All the angles of a triangle have a sum of 180 degree. ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम, एडिशन. सम मीन्स व्हाट? एडिशन. ट्राइंगल के सभी एंगल्स का एडिशन हमेशा होता है 180 डिग्री. तो ये ट्राइंगल में कितने एंगल्स है? 3. कौन से? मेजर एंगल E प्लस मेजर एंगल F प्लस मेजर एंगल G. E, F और G, इन तीनों का एडिशन कंपल्सरी कितना रहेगा? 180 डिग्री. दिस प्रॉपर्टी वी हैव लर्न last year only. Now measure angle E we don't know, so we will write it as it is. Measure angle F कितना है? 65 plus measure angle G is 45 equal to 180 degree. Now measure angle E will remain as it is. 65 plus 45 how much? 110 equal to 180 degree. Now this is an equation. So how you will solve it? 180 minus 110. हमें E की वैल्यू फाइंड करनी है, पर E के साथ प्लस 110 है. प्लस 110 को राइट में शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस. देयरफॉर मेजर एंगल E इक्वल टू 180 माइनस 110, 70 डिग्री. तो अब हमें E एंगल चाहिए था, वो हमें मिल गया है. हाउ मच? 70 डिग्री. नाउ वी विल ड्रॉ अ रफ फिगर. EG हाउ मच? 6 सेंटीमीटर. E एंगल हाउ मच? 70 डिग्री and G angle 45 degree. So this is your F. E is 70 degree. This is 45 degree. Now we will draw a fair figure. First draw the base. So EG is 6 centimeter. So first we will draw a segment of 6 centimeter. Here it is 6, here it is 0. Join both the dots. Name it as EG, 6 centimeter. At point E, how much degree angle? 70. So our side is on right side. So right side 0, 10, 20, 30, 60, 70 here. Join both the dots. Join both the dots. Now from point G we have to take 45 degree. So keep the protractor on G. Now 45 degree left वाला.
क्योंकि सेंटर के लेफ्ट में हमारी साइड है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 40 के बाद वाली फिफ्थ लाइन, दिस इज 45 डिग्री. So join it, this G point and this dot. So this is our required triangle. This is 70 degree, this is 45 degree. And F angle कितना दिया था? F angle 65 degree दिया था. So just we will check it. See here, F angle, it is, see, 60 के बाद वाली फिफ्थ लाइन 65 degree. Understood? So complete this practice set in your notebook. Okay, thank you.